Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane Om Apadamapahartaram Dataram sarvasampadam lokabhiramam Shriramam bhuyo bhuyo namamyaham. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 62, which has 28 verses. On reaching Pushkar, while Ambrisha is taking rest, Sunahshepa approaches Vishwamitra, who is practicing austerities there, and inquires of him a means of escaping death without meeting with the king's opposition. Whereupon Vishwamitra teaches him a prayer each for propitiating Indra and Lord Vishnu. By reciting these prayers, the boy secures release from Ambrisha's bondage, and the latter gets the reward of the sacrifice without sacrificing him. आज हम बालकांड की द्विषष्टितमः सर्गः अर्थात 62वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें विश्वामित्र जी द्वारा सुनहशेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या का वर्णन है। इसमें 28 श्लोक हैं। सुनहशेपम नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशाः व्यश्रमत् पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदन। शतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनहशेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। Taking Sunahsepa with him, O jewel among men, the highly illustrious king Ambarisha, for his part, rested at Pushkar at noon, ocean of Raghuvamsha. तस्य विश्रम माणस्य सुनहशेपो महायशाः पुष्करम ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रम ददर्शः। तप्यन्तमृषभिः सार्धं मातुलम परमातुरः विष्णव वंदनो दीनस्त्रश्यणया च श्रमेण च। पापातांके मुने राम वाक्यम चेदुमावाच। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे, उस समय महायशस्वी सुनहशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिले। वह अत्यंत आतुर और दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, न मे अस्ति माता न पिता ज्ञातयो बांधवाः कुतः त्रातुर्महर्षि माम सौम्य धर्मेण मुनि पुंगव। सौम्य मुनि पुंगव, न मेरी माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहां से हो सकते हैं। मैं असहाय हूं, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। Making his way to the elder Pushkara, there being two other lakes in the vicinity of the main lake, known as the middle and the younger Pushkara respectively, while the later was taking rest, the highly renowned Sunahsena, so the tradition goes, saw his maternal uncle. It has already been mentioned in verse 7 of chapter 34 that Vishwamitra had a sister, Satyavati, by name, who was given in marriage to Richika. It was this Satyavati that Sunahshepa was presumably born from. Vishwamitra, practicing austerities with other sages,
Nay, pulling a long face and looking miserable from thirst or desire to live, and the fatigue, the boy who was sore afflicted sank into the sage's lap, O Rama, and spoke as follows. So it is said, there is no mother nor father to me. How then could there be any kinsmen or relations? Be pleased to deliver me, O gentle sir, in the name of piety, O jewel among sages, for you are the redeemer of all as well as their benefactor. त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः राजा च कृतकार्यः स्यादहं दीर्घायुर्व्ययः स्वर्गलोकमु पाशनीयां तपस्तपत्वा हयनुत्तमम्। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक को प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। Pray so arrange that King Ambrisha may realize his object in the shape of a reward of his projected sacrifice, while I may also be saved from death, and attaining a long life and practicing austerities, ascend to the celestial plane, the highest of all the three worlds. समेनाथो ह्यनास्थस्य भवभव्येन चेतसा पितेव पुत्रम धर्मात्म स्त्रातुर्मर्हसि किल्बिष्टात्। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। With a cheerful mind, indeed, be you celebrated as you are, O protector to me, a forlorn child. You ought to protect me, O pious soul, against adversity born of sin, even as a father protects his son. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाच। शुनहशेप की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले। Hearing the aforesaid prayer of Sunahshepa and consoling him in many ways, the great ascetic Vishwamitra spoke to his own sons as follows. So it is said, यत् कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालो अयमागतः। बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। The time has come for ensuring our good in the other worlds, for which fathers desirous of blessings beget sons. अयं मुनिसुतो बालो मतः शरणमिच्छति अस्य जीवित मात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। This son of a hermit, who is yet a child, seeks deliverance through me. Do him a good turn, my dear sons, by merely parting with your own life. सर्वे सुकृत कर्माणः सर्वे धर्म परायणाः पशुभूता नरेंद्रस्य तृप्ति मग्ने प्रयच्छत। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। You are all engaged in virtuous acts and are all devoted to duty. Taking the place of a victim at the sacrificial performance of King Ambrisha affords satisfaction to the god of fire.
नाथ वांशश्च शुनःशेपो यज्ञश्चाग्विघ्नतो भवेत् देवतास्त्रपित्राश्च सयोर्मम चापि कृतं वचः। इससे शुनःशेप सनाथ होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा, देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। In this way, not only will Sunahshepa find a protector in us and secure deliverance from death, but the sacrifice of Ambrisha will also be completed without any let or hindrance. Nay, the gods will have been propitiated and my pledge of security given to him redeemed. मुनेस्तद् वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दा दयः सुताः साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदं ब्रुवन्। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले। Hearing the aforesaid exhortation of Vishwamitra, O jewel among men, his sons, of whom Madhuschanda was the eldest, proudly and lightly replied as follows. कथमात्म सुतान हित्वा त्राय से अन्य सुतम विभो अकार्यमिव पश्यामः शवमांस समिव भोजने। प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहां अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो वहां दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में देखते हैं। How is it that you proceed to save another's son, parting with your own sons, O Almighty Sage? We reckon this attempt of yours to be almost as sacrilegious as mixing the flesh of a dog in one's dish. तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः क्रोध संरक्त नयनो व्याहुर्तु मुपचक्रमे। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे। Hearing the aforesaid comment of his above named sons, Vishwamitra, jewel among sages, proceeded to curse them as follows, his eyes being bloodshot through rage. निहि साधु समिदं प्रोक्तं धर्मादपि विग्रहितं अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्। श्वामांस भोजिनः सर्वे वसिष्ठा इव जातशु पूर्णं वर्ष सहस्रं तु पृथिव्यामनुवत्स्यत् पृथ्व्यामनुवत्स्यत्। अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित और निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण और रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। This reply given by you, disregarding my exhortation, is intepid, nay, divorced from piety, sharp and shocking too. Like the sons of Vashishta, therefore, you shall be born on earth among the low-born classes such as the Chandalas and the Mushtikas, and living on the flesh of dogs, drag your wretched existence for a full 1000 years. कृत्वा शापस् समायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा शुनःशेप मुवाचार्तं कृत्वा रक्षां निरामयाम्। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शुनःशेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा।
Having subjected his sons to a curse as aforesaid, Vishwamitra, the foremost of hermits, then spoke to the wretched Sunahshepa as follows, ensuring protection free from disease to him by means of a mystic spell. पवित्र पाशैर बद्धो रक्त माल्या नुलेपनः वैश्रम यूपमा साद्य वाग्भिरग्नि मुदाहर इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीशस्य यज्ञे अस्मिस्ततः सिद्धिमवाप्य ससि। मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों में बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना, इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। Scrambling to the sacrificial post sacred to Lord Vishnu, when you have been bound with the cord of the darba grass and adorned with a wreath of crimson flowers and bedaubed with red sandal paste for being offered as a victim at the sacrificial performance of King Ambrisha, glorify through the sacred fire Indra and Lord Vishnu by means of glories addressed to them, and then you would do well to chant the two excellent psalms invoking the two aforesaid mentioned deities, which I am presently going to teach you. O dear son of sage Richika, thereby you will attain your object in the shape of deliverance from death at the projected sacrificial performance of King Ambrisha. शुनःशेपो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहितः त्वरया राजसिंहम् तमम्बरीशमुवाचः। शुनःशेप ने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, Learning the aforesaid couple of psalms as taught by Vishwamitra with a fully concentrated mind, Sunahshepa hastily spoke to the said King Ambrisha, a lion among kings, as follows. राज सिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निवर्तयस्व राजेंद्र दीक्षां च समुदाहर। राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। O highly intelligent monarch, O lion among kings, let us both quickly proceed to our destination. Go through the ceremony of consecration for the sacrifice, O King of Kings, and conclude the sacrifice without any hitch or problem. तद्वाक्यं ऋषि पुत्रस्य श्रुत्वा हर्ष समन्वितः जगाम नृपति शीघ्रं यज्ञवाटमतीन्द्रितः। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। Filled with joy to hear the aforesaid request of the sage's son, Sunahshepa, the king Ambrisha quickly reached the sacrificial enclosure, shaking off all forms of lethargy. सदस्यानुमते राजा पवित्रकृत लक्षणं पशुं रक्तांबरं कृत्वा यूपेतं संबंधयत। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शुनःशेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। Having bound Sunahshepa, the sacrificial victim, with a cord of darba grass, and thereby providing him with the distinctive mark of a victim, and dressing him in a red attire, the king, who acted upon the advice of the superintending priest, firmly tied him to the sacrificial post. सबद्धो वाग्भिर्ग्रया भिर्भितुष्टावत वैसुरो इंद्रमिंद्रानुजम तैव यथा वन मुनिपुत्र कहा। बंधे हुए मुनिपुत्र शुनःशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र
और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। While remaining bound, the young hermit boy duly glorified indeed the two divinities, Indra and his younger brother. Lord Vishnu also manifested as the divine dwarf by means of excellent hymns. ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्यस्तु चितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुन शेपाय वासवः। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शुनाशेप को दीर्घायु प्रदान की। Propitiated through the mystic psalms and filled with delight, Indra, the thousand-eyed divinity, thereupon granted the boon of a long life to Sunahshepa at that very moment. स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं राम सहस्राक्ष प्रसादजम्। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल पाया था। Nay, the said King Ambrisha too, O jewel among men, duly attained, O Rama, the manifold fruits of the sacrifice yielded by the grace of Indra. विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्ते पे महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्ष शतानि च। पुरुष प्रवर इसके बाद महातेजस्वी महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। The great ascetic Vishwamitra too, who is piety incarnate, began his austerities anew in the vicinity of the three lakes, going by the name of Pushkara for another 1000 years, O jewel among men. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे द्विषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 62 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam SriRamam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।